Hey guys, welcome back to another video. In this video, we're going to do 2 or 3 trade breakdown. Okay, in this video, I'm going to share uh, my lesson as well. Okay, also I'm going to share my loss and win as well, and the trade opportunity that was available, and I didn't took that trade. So सब कुछ discuss करेंगे. Okay, so first I want to discuss GPCAD. If you guys remember, on Wednesday, I guess I have uploaded one more video this week, last week of November on Wednesday, I uploaded one video on trade breakdown. तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था about GP CAD. If you guys have any one of you have watched this, if any one of you watched that video, then maybe you can understand much better way. I said on GP CAD, this was the candle that closed on Wednesday. So I discussed potentially, you can see the order flow again and again, every week, every month. It's the same thing. Okay, of course, not every week it's going to move exact same, but it's going to move similar, right? So you can understand what is the order flow. Okay, and again I'll say, not every time you going to win. Okay, sometime you read order flow right, but sometime market will not move in your favor, and it's completely okay. Okay, you have to understand trading is a series of game. It's not about one trade or two trade or three trade. Okay, you can go wrong whole week, you can go wrong whole month. Okay, that does not mean you are a bad trader, that does not mean you don't know how to trade. You guys have seen from last 4 month, I'll say 4 month, around July to now, 4 to 5 months. Okay, you guys have seen I am discussing same thing over and over, and from last 1 2 month I am doing more trade breakdown for you guys, so you can see and understand in much better way, and you can trade in much more confidence. Again, I'll say not every week is going to be your winning week. Okay, sometime uh, your bias is going to be wrong, sometime your is going to hit stop loss. So make sure you managing your risk using proper risk management. Okay, using same risk on all trade. So when you lose same amount, but when you win little bit big as compared to your loss basically. Okay, so simply just see the order flow on GPCAD. You can see last week, basically we have created this daily bearish fair value gap. This week you can see this candle. Okay, on Wednesday we close very aggressively upside, right? So this bullish fair value gap becomes inverted fair value. Sorry, bearish fair value gap becomes inverted fair value gap, right? So यहाँ पे कोई अब bearish fair value gap नहीं है, right? अब कोई भी bearish fair value gap यहाँ पे नहीं है. So next drawn liquidity is going to be a swing high, right? So now again यहाँ पे खुद देखो. ओके, लेट्स से वेडनेसडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, एंड नाउ यू नो कि दिस bearish fair value gap not get respected, and we have closed above this bearish fair, sorry, we have closed above this bearish fair value gap. So where GPCAD can move, basically either it's going to move downside to this new daily bullish fair value gap, ठीक है, or it is going to trade higher to take out this equal high buy side liquidity, where it is going to move. देखो, अब खुद मैं ये चीज़ बहुत बार बोला हूँ, एंड जो लोग वीडियो देख रहे हो कंटिन्यूसली, जो मेंटरशिप के वीडियो भी देखे हो एंड जो ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो भी देखते हो, वो लोग को तो समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा कि लेट्स से मार्केट क्लोज ही है, एंड यू कैन सी द नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो स्विंग हाई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, व्हाट एवर यू वांट टू से, बहुत क्लोज है मार्केट के, राइट? मतलब यहाँ से यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बेसिकली, राइट? इट्स वेरी क्लोज. सो अब खुद सोचो मार्केट के लिए क्या इजी होगा. क्या मार्केट के लिए ऑल द वे पहले डाउन, ऑल द वे इट विल ट्रेड लोअर टू दिस डेली बुलिश वैल्यू गैप, एंड फिर ट्रेड करेगा अपसाइड टू दिस स्विंग हाई? आई डोंट थिंक सो. क्या ये कर सकता है? ऑफ कोर्स इट कैन डू, बट वी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. ओके, फॉर मी राइट नाउ एंड फॉर मार्केट, इट लुक्स इजी कि मार्केट पहले ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि बहुत क्लोज है, राइट? So I have to look for long. And even if you see this daily bullish fair value gap, it looks like a breakaway gap, right? Because the third candle closed above the second candle, right? So this is
a breakaway gap, right? So I'm not expecting price to move all the way down to this daily bullish fair value gap. So looking for continuation to the upside. Maybe it will give us shallow retracement, something like this, and then trade higher, right? So we have to go to one time frame lower on H4 or H1 to look for anything. If we have anything here to frame our trade, to look for any point of interest, to look for the bullish setup, right? So I hope daily bias clean हुआ होगा कि daily मेरा bias क्या है and क्यों है, what are the reason basically, okay? So इसको हम थोड़ा लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो लेट्स नाउ, किसी के माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आया होगा. एक बार मैं ये ब्रेकअवे गैप हटाता हूँ. किसी ना किसी के माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि यार भाई, जब ये मार्केट लेट्स से कुछ इस टाइप से मार्केट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल. सो ऑफ कोर्स दिस टाइम आई वाज लुकिंग फॉर सेल, राइट? आई वाज लुकिंग फॉर सेल व्हेन मार्केट वाज at this daily bearish fair value gap, right? On Monday, basically, when Monday market tapped this daily bearish fair value gap, I was looking for internal to external, right? But if you see H4 or H1, you will see no entry was available there, basically, okay? You can see market very slight tap, daily bearish value gap यहाँ पे किया था, but there was no entry. You can see we had this bullish fair value gap, that is, that becomes inverted fair value gap. But let's see if we have created any bearish fair value gap or not. We don't have any sharp turn entry model, right? We have bullish fair value gap, that becomes inverted fair value gap, of course, but no bearish fair value gap right now, okay? So let's see, and you can see continuously market pushed higher and higher, basically, right? And when day closed, basically, अगर आप देखोगे, so when this daily candle closed, it has left very big wick to the upside, okay? Of course, if you go to 4 hour, you will see, let me go fast first, okay? So somewhere here daily candle closed, okay, this one, this daily candle. So if you see 4 hour time frame, it has created fair bearish value gap, but on daily it was not looking good, okay, because it has left very big wick. So I avoided this condition, basically, okay, and waited for Wednesday. So sometime it is going to happen for you, and as we discussed last on the Discord as well with few of you guys, sometime market don't look good, right? When this bearish fair value gap get, of course it get respected because the this daily candle body closed inside this bearish value gap, but created a very big wick, okay? And when on 1 hour it has offered something, some trade, I'll not lie, okay? You can see it offered like a mitigation plus bearish value gap, but I was not interested because daily closed very aggressively downside and left very big wick, right? You can see here. So what I was waiting, I know कि this daily bearish fair value gap still, let's say, ये daily fair value gap है, bearish fair value gap है, and we I have this external, and अगर let's say market for example, मैं इसको भी यहाँ पे लाता हूँ, and let's say market यहाँ से अगर reject भी करता है, for example, let's change this color. Of course it can tap this and it can trade lower. So what I was looking, अगर ये daily bearish value gap से अगर market और back impulse 2 देता है, तो I'll be looking for sell. So this was the impulse one, right? This was the impulse one, right? This was the impulse one. So I was looking for market to retrace and give me this impulse 2. Once we form this impulse 2 and form some entry area, I'll be looking for sell there, basically, okay? And I'll look for sell and I'll target that external liquidity because I know this is enough range to move, basically, okay? So I just have to wait for more confirmation sometime, and it's completely okay to wait for confirmation when you are कंफ्यूज्ड कि क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है? सो देयर वाज नो बेसिकली सेकंड इंपल्स, लेट मी शो यू. सो ये H4 बाद में हम लोग आएंगे, डोंट वरी. सो यू कैन सी इट रिट्रेस टू दिस एरिया, ओके, बट कंटिन्यूअसली पुश्ड हायर एंड हायर, okay? So no second impulse, and the next day, basically on Wednesday, you can see market closed this, basically, okay? So now on Thursday, Friday, I should look for long until market grab this buy side liquidity. Okay, so I have this liquidity untapped, so I have to look for long until market hit this liquidity level, right? So I saw 4 hour time frame created this 4 hour bullish fair value gap, right? So remember this daily becomes inverted fair value gap. हम लोग का bias bullish है, right? And I'm not expecting market to come all the way down to this daily bullish fair value gap. So on 4 hour time frame, you can see we created 4 hour bullish fair value gap.
दिस कैन बी योर एंट्री एरिया टू लुक फॉर लॉन्ग। अगर लेट्स से पहले मार्केट ओपन होता, न्यू डेली कैंडल थर्सडे को ओपन होता एंड पहले ये ट्रेड करता अपसाइड एंड देन फिर ये नीचे आता, तो क्या यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लेते? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, राइट? एंड यू कैन सी काइंड ऑफ यहाँ फेलियर स्विंग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी अपना है, ठीक है। सो हम लोग लॉन्ग नहीं लेते उस टाइम, ठीक है। बट अगर पहले मार्केट ओपन हो, नीचे ट्रेड करे टू दिस एच फोर बुलिश वैल्यू गैप, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग क्योंकि स्टिल लिक्विडिटी इज अनटैप्ड, राइट? So in this condition, you can see it tapped very beautifully, okay, to this H4 bullish fair value gap, and then continuously expanded higher basically, okay. So this can be your long entry, first long entry. Personally, I missed this. Uh, I didn't notice this one. Okay, I was focused on other pairs, so I missed this one. Okay, but I took one trade that I'm going to share basically with you guys. Okay, and you can see basically जो ये फिर थर्सडे का कैंडल था, ठीक है, ये वेडनेसडे कैंडल था, ठीक है। लेट गो वन, ठीक है। सो दिस वाज अ थर्सडे कैंडल जो हम लोग 4 आवर पे एंट्री लिए यहाँ पे, ठीक है। एंड अब फ्राइडे का कैंडल जो ओपन होने वाला है, अब देखो फ्राइडे को भी तुम्हारा बायस क्या होगा? लॉन्ग होगा। क्यों लॉन्ग बायस होगा? क्योंकि स्टिल मार्केट आपका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब नहीं किया है, राइट? स्टिल दिस बाय साइड लिक्विडिटी इज अनटैप्ड, ओके। सो आई वाज लुकिंग फॉर लॉन्ग ऑन फ्राइडे एज वेल। सो दिस एंट्री आई पर्सनली मिस। दिस वाज अ वेरी गुड एंट्री एंड लेट्स से जितने लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, सो लेट्स से दिस इज द 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। अगर आप ओपनिंग में एंट्री लेते हैं या फिर मिडिल 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेते हैं, इट्स टोटली ऑन यू। जहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, मेरा स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल ऑफ फेयर वैल्यू गैप के नीचे जाता, टारगेट वाज इज गोइंग टू बी दिस, ओके। मे बी इट विल नॉट गिव यू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, बट इवन इफ इट्स ऑफरिंग 1:1, आई एम गोइंग टू टेक दिस, ओके। सो इट वाज ऑफरिंग 1:1.5, and in swing I like to prefer to take even 1:1 trade, 1:1.5 trade if it's high probability, okay। वही चीज़ अगर 50% में आप एंट्री लेते हैं, H4 फेयर वैल्यू आपके 50% लेते हैं, तो इट इज इजिली गिविंग यू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ओके। इट्स टोटली ऑन यू, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड एंट्री जो फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, ओके। सो यू कैन सी बेसिकली वी हैव क्रिएटेड व्हाट हियर, you can see this candle, ये लिक्विडिटी, ये जो हाई है, एकदम हल्का सा एकदम टीनी टाइनी स्विप किया, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड। सो अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लियो तो डेफिनेटली इट हैज बीन हिट योर टेक प्रॉफिट लेवल, राइट? बट व्हेन आई सॉ दिस, इट इज लुक्स लाइक अ इक्वल हाई, राइट? इक्वल हाई लेफ्ट, okay, but if you have entered here, of course you have booked your profit when market tap this level, right? So now the second entry was basically, you can see we have created another H4 bullish value gap here, right? ठीक है। सो आई नो आई हैव दिस इक्वल हाई बाय साइड लिक्विडिटी ऑन द फ्राइडे, क्लीन इक्वल हाई। आई नो दिस इज माई POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सो आई कैन लुक फॉर दिस H4 लॉन्ग टू दिस हाई बेसिकली, राइट? ठीक है। नाउ दिस was very interesting for me, engulfing, right? Those who have seen, basically you can see sweep previous candle low and close above the previous candle high, previous candle opening price basically. So we have created 4 hour engulfing again. So many times I have said with you guys, I like to see engulfing at some key level. I want to see engulfing um, towards my bias basically, okay। So here our bias was bullish, right? And जो 4 आवर engulfing बना है, ये एक अच्छी की लेवल पे बना है एंड मेरे बायस के अकॉर्डिंग बना है, राइट? सो दिस वाज अ 4 आवर बुलिश engulfing। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग डायरेक्टली एट द 50% और 25% जो भी आप लेते हो ट्रेड, और यू कैन गो टू लोअर टाइम फ्रेम फॉर योर एंट्री। सो दिस गिव्स मी वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट फॉर द ट्रेड बेसिकली, ओके। तो नाउ अगर आप H4 से M15 भी जाते हो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, सो लेट्स गो टू H4 to M15, okay, and remember we have this 4 hour bullish engulfing, so let me use this basically, okay, ठीक है। So using just Fibonacci from the low to the high of the bullish engulfing। So अगर आप H4 से M15 भी ट्रेड लेते हो, okay, so you can see, मैं एक बार के लिए हटा ही देता हूँ engulfing, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लीन दिखे पिक्चर।
ठीक है। सो दिस वाज आवर H4 न्यू एरिया बेसिकली। रुक जाओ एक सेकेंड, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है। सो दिस वाज आवर न्यू 4 आवर वैल्यू गैप जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ है, राइट, यू कैन सी दिस वन। ठीक है। अब यहाँ से अगर H4 में M15 में ट्रेड लोगे, इनसाइड न्यूयॉर्क किल जोन देयर वाज अ ट्रेड, ओके, यू कैन सी दिस वाज द H4 एरिया, दिस वाज योर फर्स्ट इम्पल्स, राइट, रिट्रेसमेंट, सेकेंड इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट होने वाला है। ठीक है। सो हियर आई एंटेड पर्सनली, ओके, ठीक है, एंड इट वाज इनसाइड न्यूयॉर्क किल जोन। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो बेसिकली 8 AM टू लेट्स से 12 AM तक या 11:30। ठीक है। सो यू कैन सी दिस एंट्री हियर आई एंटर्ड बेसिकली, took long, stop loss was here, and I was targeting that equal high. It was giving me again 1 to 1.5 hour. Okay, let me show you the screenshot as well. I have taken that time. It was which trade? GP CAD, no? Yeah, this one I guess, if I'm not wrong. Okay, so you can see this was the live execution when I took the screenshot. We have this H4 bullish engulfing, M15, ये H4 चार्ट है लेफ्ट में और M15 चार्ट है उसका। ठीक है। सो M15 सेकेंड इम्पल्स, इम्पल्स 1, इम्पल्स 2, इम्पल्स 2 एंट्री ऑन द फेयर वैल्यू गैप, ओके, but I did one mistake again. That's why I am making this video. So I entered here perfectly. Market start pushing higher. Okay, I saw this high priority order block form. Okay, so this was the first entry. Okay, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है। I saw we formed this bullish engulf, sorry, bullish high, high priority order block. Okay, bullish high priority order block we formed. So what I did, I added more position. I put my another long position here, put stop loss below the body, okay, and I was targeting this high with 1 is to 1.2 hour, okay. So what happened basically, and ये जो फर्स्ट एंट्री था वो मैंने क्या किया कि इसको भी मैंने ट्रेल कर लिया यहाँ पे, ओके, जो एंट्री यहाँ यहाँ पे जो मैंने लिया था पहला एंट्री, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे मैंने सेट कर दिया, ओके, बिकॉज आई वॉज टू कॉन्फिडेंट कि मार्केट तो नीचे आएगा ही नहीं, ओके। सो व्हाट हैपेंड इन जस्ट अनदर कैंडल, मार्केट ट्रेडेड लोअर। ये जो पहला एंट्री, जो ये सेकंड एंट्री मैंने लिया था ऑर्डर ब्लॉक में, ये तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो पहला एंट्री था जो मैंने ट्रेल किया स्टॉप लॉस जिसका ब्रेक इवन पे अराउंड, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। एंड देन मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ा कंसोलिडेट किया, काफ़ी कंसोलिडेट किया इस 15 मिनट बुलिश पे वैल्यू गैप ने, ओके, एंड देन मूव इन माय फेवर एंड हिट माय टीपी, ओके। So this is the lesson I learned basically. Sorry, wrong thing. So I wanted to show you the screenshot as well I took for you guys. Okay. So you can see this was the first trade on GP. इसको मैं थोड़ा इस टाइप से दिखाता हूँ तो मे भी समझ में आए. Just for the transparency and to show you guys, not always I also win. Sometimes I also do stupid mistakes. So you can see this was a execution I am sharing with you guys. So here you can see this was the 15 मिनट bullish fair value gap. जो यहाँ पे अपना एंट्री था, पहला एंट्री, ठीक है, यहाँ पे. So यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, जैसे मैं बताया, जब ये क्लोज हुआ ये कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक के कारण मैंने शिफ्ट कर लिया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड देन मार्केट मूव इन फेवर, एंड सेम थिंग ऑन हियर ऑल्सो। जो ये ऑर्डर ब्लॉक में मैंने एंट्री लिया था, ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक में मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे, सो उसका ये वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। So this was a good lesson for me personally. Okay, so what I learned, कि always put your stop loss that you have planned and you using always. Okay, so you guys know कि I like to put stop loss below the wick basically. अगर एक चीज मेरा stop loss इसके नीचे रहता ना तो मे बी स्प्रेड के कारण मैं स्टॉप आउट हो जाता, बट स्टिल इट लुक्स लिटल सेफर, राइट, बिकॉज मार्केट रिस्पेक्टेड दिस 15 मिनट बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एंड जल्दी, काफ़ी जल्दी स्टॉप लॉस, पहला जो एंट्री था यहाँ पे, पहला वाला जो एंट्री था उसको जल्दी भी एकदम ट्रेल मत ही करो, ओके, लेट इट लेट लेट मार्केट give some room to move basically, okay. And also can see this bearish value gap become inverted fair value gap on the second impulse, right. So
You can add more thing here. Of course, you can add this as a breaker, more confluence basically. Okay, but I hope ओवरऑल आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेमवर्क एंड नैरेटिव समझ में आ गया होगा ट्रेड का. ठीक है, जस्ट लेट मी चेक. यही वीडियो 20 मिनट का बन गया. ओ माय. ओके, सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा. एंड यू कैन सी ऑल्सो 4 आवर जो इनगल्फिंग था अपना यहाँ पे. हाँ, and you can see 4 hour bullish engulfing respected as well. Okay, so this was a very good trade, and I'll do more trade breakdown later.